Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 4th January, that is Thursday. आज 4th January Thursday है, and we are here with the Hindu analysis. The first, these are the two important articles. The first one talking about 103 killed in twin blast at memorial event in Iran. So we will be discussing about it. This is a very important article. Another one is Supreme Court upholds SEBI probe, turns the spotlight on Hindenburg's conduct and all. So these are the two articles we will be discussing. सबसे पहले ये वाला discuss करते हैं. Am I audible? आवाज आ रही है? Okay, yes. Good morning, guys. Good morning, everyone. So let's start with this one. Now, what exactly it is? There's a place in Iran, and that's called as Kerman. So let me first show it. This is India. This is Iran. The capital of Iran is Tehran. यहाँ पे एक जगह है Kerman. Now here the blast happened where 103 people died. Now what is that? So basically एक memorial event था. देखो actually क्या है? So he was actually Qasim Soleimani. He was a very senior army officer of Iran, and he was assassinated exactly 4 years back. Okay. Now he was considered as one of the top most military general of Iran. And अगर आप देखोगे इनके बारे में, so it's written that he died on 3rd January 2020. So I mean yesterday it was his the 3rd January 2024 was there, so it was his actually death anniversary. Okay, so that is what you should be knowing it. And it is said that there were news that US drone strike. He died in a US drone strike. So he was an Iranian army officer, a senior army general, and he was on a visit to Iraq. The capital of Iraq is Baghdad. And he was there, and he was actually killed by or assassinated by USA on 3rd January 2020. Okay, now so yesterday was 3rd January 2024, and that was his actually death anniversary. He died in Baghdad in Iraq, and he was brought back and he was buried in the same Kerman city. ठीक है, so ये Kerman जगह यही उनके tomb है. You understand tomb? Kerman लिखते हैं Kerman. Tomb means the place where actually he is buried. Okay. Okay. Yes. So 103 killed in a twin blast at memorial event in Iran. So bomb. Okay, Priya Chavan, we will discuss it with our team. Okay. Now, so that was in the news. So bomb rips through a crowd in Kerman commemorating slain General Qasim Soleimani on the anniversary of his killing. Khamenei was a harsh response, national day of mourning today and all. So the name, so there nearby there was a mosque called as Sahib Al Zaman Mosque. Okay, so 103 killed in that event. Just after, I mean, the 4th anniversary was there and all, where people were actually there, and a blast happened where actually they died and all. यहाँ पर है 95 people killed according to the BBC report and all in Iran. General Qasim Soleimani stormed state TV and all. So just have an idea. We have discussed about it. Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei blamed evil and criminal enemies of the country for the response for the attack and all. Okay, and even the Iran's president Ibrahim Al-Riasi also condemned the heinous crime. Okay, now so basically the president of Iran is Ibrahim Riasi. And the supreme leader, so there's a concept of supreme leader in Iran, and his name is Ali Khamenei. Just have an idea because it is in the news. The capital of Iran is actually Tehran. Okay, so just have an idea about it. Okay, now there was another article on first page. Supreme Court upholds SEBI probe, turns the spotlight on Hindenburg's conduct. Now, what happened was, I hope you are aware, last year in January it was in the news. The Hindenburg report came, which actually led to the fall of prices of the SEBI. The fall of prices of Adani stock market and all stock share price. I hope you are aware it went down just after it in January last year. It was very much in the news. SEBI directed to investigate if the short position taken by Hindenburg amounted to any infraction of law. Judiciary's review of regulatory framework policy of SEBI is limited to check if there is any manifest arbitrariness and all. So these are the things. So Supreme Court has said that SEBI will be doing the taking the probe. Okay, SEBI is Securities and Exchange Board of India. Okay, so this is an agency which is actually responsible for controlling or regulating stock market and all.
स्टॉक मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए सेबी इज देयर, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, है ना, कि सेबी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. नाउ उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर सेट अप अ कमेटी टू प्रोब द अदानी हिंडनबर्ग केस व्हिच वाज हेडेड बाय जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एम सापरे, जस्टिस आर वी रविंद्रन, जस्टिस एस मुरलीधर. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक कमेटी बनाई थी ताकि अदानी हिंडनबर्ग केस को प्रोब किया जाए. तो उस कमेटी के हेड का नाम क्या था, आपको बताना है. Anyone? Yes, the right answer is Justice A.M. Sapre. B is the right answer. Yes, Priya, Chavan, Ramesh, you are right. Supreme Court forms expert panel to probe any regulatory failure on Adani issue. So the right answer is B is the right answer to this question. ठीक है ना. तो इसमें आप देखना, ये लास्ट ईयर मार्च में न्यूज में था. सो ही सेट अप अ कमिटी अंडर दिस एंड ऑल. ठीक है. ओके. So in this article, the Justice A.M. Sapre committee is also being talked about and all. ठीक है. So let's wait for it. Let's wait for the SEBI report and all. क्या SEBI report बनाती है, final report, and then we will actually talk in detail. So what is SEBI? Actually, it was formed in 1988, and the law was passed. SEBI Act was formed later on. SEBI Act was passed in 1992, and it became a statutory body. ठीक है. So just have an idea about it. Yes. So it is headquartered in Mumbai. The SEBI is headquartered in Mumbai. The chairperson is Madhabi Puri Bhuj. She is the first woman chairperson. Okay. So just have an idea about that as well. Okay. Yes. Let's move on to the next one. In नीचे में एक article थी, transport workers may step up protest. I hope you are aware that recently the government, the parliament has passed a law to replace Indian Penal Code with BNS, Bharatiya Nyaya Samhita. And there are provisions like section 104 and all, because of which the truck drivers are protesting. So basically 104 is talking about that individual could face a maximum penalty of 10 years if they flee. Hit and run case ही है ना, कि अगर गलती से भी hit हो गया and if the person will run away, then up to 10 years of jail can be there. Okay, तो इसमें बहुत सारे reason है. There are a lot of reasons why actually they are protesting. So for example, the one reason is, let's say the truck driver mistakenly hit someone, किसी को गलती से मार दिया, धक्का लग गया, तो वो इसलिए रन कर जाता है because if he will not run away, if the driver will not run away, perhaps he might be lynched. ये editorial में also will be discussing it, that अगर वो नहीं भागेगा तो लोग उसको जान से मार देंगे, अगर उसकी गलती नहीं होगी तो भी maybe. So that is why that what we call it as mob lynching or mob justice might start happening. The people will come and they will start beating the truck driver and all. So that is why you should be knowing about it. ठीक है. Okay. Transport Association Auto Rickshaw Union in Pune called for the withdrawal of section 1041. Death by negligence in the newly proposed Bharatiya Nyaya Samhita bill and all. Okay. Yes. Okay, just before moving on, we are having a CLAT 2025 comprehensive course. If you have any query, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो if you have any query regarding this course. Okay, yes, let's start with the editorial. IT searches a form of extra constitutional power. So we'll be talking about it. देखो actually क्या है, is talking about income tax searches. इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, but basic things we will be discussing it. Like for example, he is an advocate. He is writing about in August 2017 a 9-judge bench. So actually case is very famous, K.S. Puttaswamy case. K.S. Puttaswamy case. ठीक है. In which the Supreme Court said that right to privacy is a fundamental right under Article 21. ठीक है. देखो Article 21 ये नहीं है, right to life, protection of life and liberty. So right to life है ना, has been expanded by Supreme Court a lot. इसको काफी expand किया Supreme Court ने. ठीक है. And one of the definition actually is the Supreme Court has said right to life means right to live with dignity, right to clean environment. One of the interpretation was that right to life also includes right to privacy. Okay. So the case Puttaswamy case declared to arousing claims that the Constitution of India guaranteed to persons a fundamental right to privacy. It was widely believed that the verdict would keep assure our civil rights and all. तो ये बता रहे हैं कि जब 2017 में this judgment came, 9-judge bench, 9-0 judgment था. All the judges said that yes, right to privacy is a fundamental right under Article 21. ठीक है. So that was being discussed. But as much as the ruling infused life into the Constitution's text when it has to come to interpreting our statutes, the meaning ascribed to our rights and all, the promised culture of justification grounded in principles such as proportionality is rarely shown. ठीक है. अब इतना डिटेल आपको नहीं जाना, एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, लेकिन ये दैट्स नॉट फॉर यू.
ठीक है. Then he is giving an example of an income tax act and all, which grants the taxman the untrammeled police power to forcibly search person and their properties and seize goods found during such searches and all. ठीक है, तो वो बता ये रहे कि टैक्समैन मतलब होता है टैक्स ऑफिसर्स यानी इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास पावर होता है. दे हैव ऑल द पुलिस पावर्स एक्चुअली टू एक्चुअली रेड समवेयर है ना, सीज गुड्स है ना, और बाकी चीजें भी सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं ऑल. सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. लास्ट मंथ द गुजरात हाईकोर्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑन अ रेड कंडक्टेड ऑन लॉयर. ठीक है. अब क्या हुआ था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक लॉयर पर रेड कंडक्ट किया था. गुजरात हाईकोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया that where he and his family members according to his counsel were kept in virtual detention for days together with the search continuing. तो ऐसा क्या गया, उनकी लॉयर ने कहा, लॉयर जिनका रेड हुआ तो उनके लॉयर ने कहा कि उनको कई दिन तक जेल में रखा गया. डिटेंशन मतलब भी एक तरह का जेल ही होता है, मतलब अरेस्ट कर लिया गया. एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट वाज सॉर्ट ऑफ एन अरेस्ट एंड ऑल, एंड सर्चेस वर डन. तो इसी की वो एग्जांपल दे रहे हैं. ठीक है. Then he is going back in the history कि ओरिजिनली जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास उतना पावर नहीं होता था. Later on, the union government sought to rectify this through the enactment of Taxation and Income Act. तो फिर बाद में लॉ बनाया गया. Then the Supreme Court struck it down. और हिस्ट्री में जाना, इतना हिस्ट्री में आपको नहीं जाना. You are not supposed to go in that history and all. When the income tax law was altogether refashioned through the enactment of new legislation in 1961, express powers of search and seizure were vested through section 132. फिर और भी बहुत सारे सेक्शंस आए, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है. He is going very much in detail. He is giving examples and all. ठीक है. Then he is quoting Article 20, Clause 3. This we teach in the legal section and all. That Article 20 Clause 3 क्या कहता है? No person shall be accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा को फोर्स नहीं किया जाए कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस हो जाए, यानी अपने ही खिलाफ अपना मतलब जैसे होता है ना, पुलिस कभी कभी जबरदस्ती करवा देती है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने एक क्राइम किया. सो दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड. आई मीन दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज आल्सो बीइंग कोटेड हियर. ठीक है. फिर एक साइड में आर्टिकल थी ड्राइवर्स स्ट्राइक से रिलेटेड. द प्रोविजंस इन द भारतीय न्याय संहिता दैट ट्रीट्स हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस एज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द ऑफेंस कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस और नेग्लिजेंस विल बी द फर्स्ट इन द न्यू येट टू बी इम्प्लीमेंटेड कोड टू बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट्स सेवेरिटी. ठीक है. अब देखो इसमें बात ये हो रही है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस. सो दीज आर एक्चुअली द ट्रेड यूनियंस है ना, द यूनियंस जो होता है ट्रक ड्राइवर्स का यूनियंस वगैरह है, ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर का, एंड दे आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग दैट इट शुड बी विथड्रॉन. सेक्शन 106 और 104. क्यों वो कह रहे हैं है ना, body taking the stand with the strike was primarily resorted to the drivers who feared additional criminal liability. The issue will require tactful handling and all. तो एक्चुअली क्या है, सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी बीएनएस विल रिप्लेस 304 ऑफ आईपीसी. पहले 304A ऑफ आईपीसी होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 106 ऑफ बीएनएस के द्वारा. ठीक है. द एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड फॉर अ 2-year जेल टर्म. तो अभी जो है ना इस प्रोविजन में आईपीसी में 2 साल का जेल होता है, लेकिन इसमें 10 साल का जेल हो जाएगा. ठीक है. हिट एंड रन केस में. नाउ व्हाई दे आर फियरिंग इट, देखो उसमें लिखा ये है कि द सेकंड क्लॉज कंसर्न्स रोड एक्सीडेंट इन विच द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग टू अ पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट द पर्सन मे बी जेल्ड अप टू 10 years और अ फाइन. अगर किसी से गलती से धक्का लग गया, अगर उसको आइडियली ही इज सपोज टू गो टू द पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट एंड रिपोर्ट कि मेरे से गलती से धक्का लग गया है. अगर वो भाग जाएगा, इफ द पर्सन रन्स अवे, देन ऑफ कोर्स 10 years तक जेल हो सकती है. अब इसमें यह है कि ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ फियर ऑफ लिंचिंग. यानी जो ड्राइवर्स लोग का, ट्रक ड्राइवर्स की राय है कि अगर गलती से किसी से धक्का भी लग गया तो इसलिए भागता है कि नहीं तो लोग उसको जान से मार देंगे. सो इफ द ड्राइवर विल नॉट रन अवे, देन द पीपल अराउंड इट विल रन अवे. If the driver will not run away, then the people will actually lynch the driver. Lynch मतलब समझो ना, मॉब भीड़ आ जाएगी, भीड़ उसको मारने लगेगी ड्राइवर को. वो देखेगी फिर चेक भी नहीं करेगी कि ड्राइवर की गलती थी कि जो बंदा की गलती थी. ठीक है. सो they come and they start beating the driver and all, even without checking, verifying the fact. And mob lynching is very dangerous. इसलिए कि उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गेट्स वायलेटेड. वो क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर से लग गया तो लोग मानेंगे कि ट्रक ड्राइवर की गलती थी. हो सकता है ना कि किसी और आदमी जो सामने आया तो उसकी गलती हो. But yes, that is the problem and all. And that is why the driver runs away. Whenever a driver by mistake hits someone, he runs away. In such cases, the authorities seem to believe that such drivers can move away from the scene of crime and then report the police and all. ये भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो भाग जाए, बाद में जाके पुलिस को रिपोर्ट करे ताकि अपनी पहली लाइफ बचा ले. Okay, so that is why the term hit and run is one in which the offending vehicle is not identified and all. ठीक है, ये सब बात हो रही है ना. So that is, these are the protest and all. The blood management system needs a fresh infusion and all. ठीक है. तो ये ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखो
दिस इज एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन, है ना। एक आदमी उसने ब्लड डोनेट किया और फिर ये जो है मरीज को द पेशेंट इज गिवन दिस ब्लड, राइट। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। दैट्स कॉल्ड एज द ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब है कि अगर ब्लड बैंक होता है, एक्चुअली एवरी हॉस्पिटल हैज अ ब्लड बैंक या सेपरेट ब्लड बैंक होता है, तो वहाँ पीपल गो एंड डोनेट, लोग जाते हैं डोनेट करते हैं, एंड फ्रॉम देयर इट इज गिवन टू द पेशेंट्स, बीमार मरीज को दिया जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। इसको पूरे को ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो नीड्स अ फ्रेश इन्फ्यूजन का मतलब है कि इसको और अच्छा स्ट्रांग बनाया जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज स्टिल नॉट वेरी परफेक्ट एंड ऑल, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, पेशेंट्स को टाइम पर बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं मिल पाता है ब्लड, बहुत सारे लोग डोनेट नहीं करते डर के, बहुत सारे रीजन से वी नीड टू सॉल्व दोस रीजंस। द कोविड-19 पैंडेमिक मैग्निफाइड द इनइक्वालिटीज इन पब्लिक हेल्थ अक्रॉस द ग्लोब। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव राइटली एंडोर्स्ड द नीड टू इंप्रूव द ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर as a tool to catalyze economic growth and secure the future of the planet। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि कोविड-19 के बाद और इनइक्वालिटीज यानी इनइक्वालिटीज के सेंस में यानी और ज्यादा बढ़ गई है। रिच आर एक्चुअली बिकमिंग रिचर एंड दे हैव ऑल द health facilities, the poor do not get all the facilities and all, है ना। So ये सब बात हो रही है, these are the things being talked about। Blood and its various products play a crucial role in a number of medical scenarios। Yes, अब ब्लड डोनेशन जो है बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में, जैसे सर्जरीज में, इमरजेंसी प्रोसीजर, कैंसर, थैलासीमिया में, बहुत सारी बीमारी में ब्लड चढ़ाना पड़ता है ना। एंड फॉर दैट देयर शुड बी पीपल हु शुड डोनेट द ब्लड। ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए ताकि फॉरन ब्लड मिल जाए, है ना। So these are the things, है ना। The recent report by the WHO World Health Organization has brought attention to the global disparities in blood collection। Disparity मतलब वही inequality, yeah। So for example, despite 14% of the world population, WHO African countries could only collect 5% of the global blood donation। तो अफ्रीकन कंट्रीज में 14% आबादी है, लेकिन ब्लड डोनेशन जो होता है सिर्फ 5% होता है। ओके, सो दैट इज एन इशू। यस, वी नीड टू प्रमोट मोर एंड मोर ब्लड डोनेशन ताकि यंग लोग आए और ब्लड डोनेट करें ना। व्हाइल इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम, द कंट्री स्टिल फेसेस अ पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ ब्लड यूनिट्स। ये बात सही है कि इंडिया ने इंप्रूव किया अपना ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम। वी हैव इंप्रूव्ड इट, द पीपल आर मोर कमिंग एंड डोनेटिंग द ब्लड, the system, the blood banks are getting set up, but still we are having a shortage। perennial मतलब पूरा entire year ये shortage रहती है, ठीक है। so in the entire 1 year, the entire year we see the shortage of blood somewhere or the other side, है ना। now there's a question for you, since we are talking about the blood donation and all, which of the following blood group is universal donor? A plus, AB plus, O negative, O plus। what is the right answer to this question? इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप? Anyone? And universal acceptor ही बता दो, I'll be very happy। नहीं, people are saying D। No, the right answer is C। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव होता है, ठीक है। आई नो कि पीपल विल गेट कंफ्यूज बिटवीन C and D, बट द राइट आंसर इज C। Universal donor means if someone is having an O negative blood, he or she can donate to everyone, ठीक है। Similarly, if someone is having an AB plus, he or she can take blood from anyone else, ठीक है। वो ब्लड ले सकता है किसी से भी, है ना। So that's a universal donor and universal acceptor। इसे पता होना चाहिए। Yes, of Saffinomani, AB positive universal acceptor होता है, good, ठीक है। इसे बेसिक चीज है ना। Then the author is quoting an example of a university where actually कि कहाँ कितना, इतना ये सब numbers याद नहीं रखना, but just have a basic idea ना, कि कितने अगर ब्लड की कमी है तो इतना 1 लाख हार्ट सर्जरीज नहीं हो पाएगा, इतना बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इश्यूज एंड ऑल, ठीक है। सो आई मीन सो वी नीड टू एक्चुअली इंक्रीज द ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम, प्लस इंक्रीज मोटिवेट पीपल टू डोनेट ब्लड। यंग पीपल शुड डोनेट ब्लड, है ना। दैट्स द आइडिया। इनइक्विटीज इन एक्सेस टू सेफ एंड सस्टेनेबल ब्लड कैन बी मिटिगेटेड थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जॉइंट वेंचर। बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज शुड कम टुगेदर, ठीक है। दैट्स द आइडिया ऑफ PPP। Collaboration between leading industry players hold immense potential in introducing innovative models for blood collection and distribution, effectively addressing numerous existing challenges। ठीक है, अब उसमें सॉल्यूशन क्या बता रहे? हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे होता है कि जैसे इसमें क्या लिख रहे हैं, इन वन इनोवेटिव मेथड वेयर हाई वॉल्यूम ब्लड बैंक्स एक्ट एज अ हब फॉर स्मॉलर ब्लड सेंटर। जैसे हाई वॉल्यूम ब्लड बैंक को बड़ा लेवल का, है ना, ब्लड बैंक, ठीक है। और बड़ा सा ब्लड बैंक होगा, मतलब बड़ा सा हॉस्पिटल टाइप होगा, उसमें और क्या हब एंड स्पोक मॉडल ऐसा कुछ होता है। दैट्स कॉल्ड एज हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है।
ओके और ये जो है ना वो स्मॉल ब्लड बैंक है, ये सब छोटा छोटा। अब उसमें क्या होगा कि लोग पीपल विल कम एंड डोनेट हियर, तो हर अपने अपने मोहल्ला में जाके लोग डोनेट करेंगे, यहाँ अपने मोहल्ला में डोनेट करेंगे, इन देयर लोकेलिटी पीपल विल कम एंड डोनेट, ठीक है। ओके फिर यहाँ से यहाँ जाएगा ब्लड, ठीक है, मेन सेंटर में चला जाएगा। ओके दैट्स कॉल्ड एज हब एंड स्पोक मॉडल, इसको कहते हैं हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है। अब देखो सारा ब्लड यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इफ ए ब्लड इज रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कहीं पे मान लीजिए इस जगह में हमें ब्लड की जरूरत है, सो इट विल प्रोवाइड इट, है ना, हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा नॉट, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ ये कुछ आइडियाज वो बता रहे हैं ना। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम दैट परपेचुएट्स इनइक्वालिटीज एसोसिएटेड विद इज द प्रोपगेशन ऑफ मिथ एंड डिसइंफॉर्मेशन, हाँ, अराउंड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। अब क्या होता है कि बहुत सारे फर्जी न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि अगर ब्लड डोनेट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो देयर इज अ फियर अमंग द पीपल, द लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट डोनेट द ब्लड फियरिंग दैट इट विल अफेक्ट देम, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, बट इन रियलिटी इट इज द अपोजिट। इफ यू डोनेट अ ब्लड यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव बेनिफिट्स, ठीक है, ठीक है। जैसे हार्ट डिजीज कम होगा, है ना, लेस लाइकली टू एक्वायर एनी टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मेनी अदर रीजंस इफ यू गो एंड फाइंड आउट, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च भी करना, WHO के वेबसाइट्स पे एंड ऑल, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है। सो द वन हु डोनेट्स ही आल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट, तो जो बंदा ब्लड डोनेट करता है उसको भी बहुत फायदा होता है, ठीक है, और कोई नुकसान नहीं होता है सच, ठीक है। Unless and until if someone is having a disease, he or she cannot donate, but if a person is healthy, ठीक है, तो of course he or she can donate। तो इसमें ये चीज है कि बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से लोग डोनेट नहीं करते। तो अगर लोग डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक को मिलेगा कैसे ब्लड, और फिर वो पेशेंट को हेल्प कैसे करेगा। जैसे कि जो आदमी यंग है, हेल्दी, हो सकता है फ्यूचर में उसी को जरूरत पड़े, है ना। सो द यंग पीपल शुड कम आउट एंड डोनेट मोर एंड मोर एज यंग हेल्दी पीपल, है ना, so that when he or she becomes old or having a disease, then he or she should also expect the same from other fellow human beings, ठीक है। That is what the idea is. While the government and its agency have tried to improve awareness through regular campaigns, the private sector can work closely with the government to launch dedicated awareness campaign aimed at grassroots and all, ठीक है। So these are the things being talked about. The government और private companies मिल करके इस campaign को promote कर सकती है to encourage people to donate bloods and all, है ना। That is what you should be knowing it. The next is blow to Netanyahu. See, recently this was very much in the news. Actually, Israel has been in news for two reasons. One is because of war. उससे पहले एक और चीज था, वो judicial overhaul. So this was in the news even last year, I think from February, March and all. Now what happened was actually क्या हुआ था कि Israel's parliament passed a law. पहले आप इसका आंसर बताइए, what is the name of Israel Parliament of Israel? It passed a law and that was considered as judicial overhaul, where basically the parliament was supposed to weaken the judiciary. ऐसा लोग बोल रहे थे, the protesters were saying that it will weaken the Supreme Court or the judiciary of Israel. उसको judicial overhaul कहा गया था, and a lot of protest happened in this regard and all in the entire Israel and all. What is the name of the parliament of Israel? बताइए। The right answer is Knesset. Yes, this is Knesset, ठीक है। Okay, तो इनफैक्ट इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि इजरायली एम्बेसी शट डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलोइंग स्ट्राइक अगेंस्ट नेतन्याहु's judicial overhaul. So Benjamin Netanyahu is the prime minister and he decided to initiate a bill. The bill was passed in the parliament and a lot of protests. देखो ये लास्ट ईयर का है, 27 मार्च का। इजराइल सुप्रीम कोर्ट, अब ये न्यूज आया है रिसेंटली, देखो 2 जनवरी का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल हैज ओवरटर्न्ड इट। तो जो जुडिशियल ओवरहॉल है जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसको पलट दिया इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी मच इन द न्यूज, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए ना। इजराइल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास बाय नेसेट. नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, ठीक है। Last year that sought to limit the judiciary's power is a clear setback to government of Prime Minister Benjamin Netanyahu, है ना. He is also fighting a war at Gaza and all, ठीक है. So that is what you should be knowing it, ठीक है. Now there is a question for you. This was asked in CLAT, those are B's, and this is mentioned in the passage. अब इसका आंसर बताओ. Which of the following is correct? Israel does not have a constitution. Israel constitution is like ordinary law. No basic constitution but a basic law. Israel has a constitution of 67. What's the right answer? बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बट अ बेसिक लॉ ऑफ 1950. ये क्वेश्चन आया था, ठीक है. एंड दिस इज बीइंग मेंशन इन दिस पैसेज. अगर आप देखोगे, है ना,
that it had the power to rule over the rule basic laws, है ना. 8 judges against the 7 dissenters rule in favor of striking down the law that scrapped reasonability standards. ठीक है, ठीक है. तो 15 जजेस थे जिसमें 8 ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो मेजोरिटी जजमेंट प्रिवेल्स एंड ऑल, है ना. द लेजिस्लेशन व्हिच अमेंडेड इजराइल्स बेसिक लॉ, तो इजराइल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेसिक लॉ ही कहते हैं, उसको चेंज किया था, and changed in such a way that the protesters, those who were opposing it, they said that it will weaken the judiciary. However, this was struck down by the Supreme Court. ठीक है ना. तो ये बेसिक लॉ की बात हो रही है ना. So that is what you should be knowing it. Supreme Court has put a break on the overhaul plan. Now its decision comes at a precarious time for Netanyahu, who has seen popularity plummeting. So we are seeing, actually the author is saying that the Benjamin Netanyahu's popularity is plummeting after his government failed to detect and stop the October 7 attack and all. तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू's popularity is plummeting मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्लिप्स. तो वॉर के बाद खास के जुडिशियल और रिफॉर्म की वजह से एंड वॉर की वजह से नेतन्याहू's popularity is plummeting means going down, नीचे की तरफ जा रहा. ओके, आप देख सकते हो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एंड his popularity is going down for 2 reasons. The first, last year in March, he decided to come up with judicial overhaul, and the protesters, those who were opposing, they said it will weaken the judiciary. The second one actually was, he was actually the war, and just after the war and all, the war is happening and all, this has also decreased his popularity and all. Okay, so that is what it was in the news. Okay, and who is the president of Israel? So the president of Israel is Isaac Herzog. Just have an idea about it, है ना. फिर एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था, अंडरस्टैंडिंग द पीस पैक्ट विद उल्फा. ओके, नाउ व्हाट इज उल्फा? उल्फा is actually a banned organization, a United Liberation Front of Assam. It is an armed militant organization banned by government of India. Okay, citing it as a terrorist organization, it is banned. Okay, but recently we have seen some sort of talks. ठीक है, तो इसी talks की बात हो रही है. The government has done some talks with Ulfa and all. Peace pact एक तरह का हुआ है, ठीक है. So basically the pro-talks faction of the Ulfa United Liberation Front of Assam signed a tripartite peace deal with Center and Assam government on December 29, 2023. Okay, and the head of Ulfa is Paresh Barua and all. So just have an idea, because this is also very much in the news. The Ulfa is a byproduct of the anti-foreigners Assam agitation that began in 1979 and all. Okay, so this is actually started in 1979. They are going in history and all. Okay, and the government banned it in 1990 with an offensive code named Operation Bajrang. So ये याद रखिएगा, this is the code name under which the government banned it, Operation Bajrang. ठीक है. And in fact, AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, was enforced at many places in Assam and all. Okay, so just have an idea about it. But recently the government has done some pact and all. So ये आपको follow करना है. थोड़ा सा आप उल्फा के बारे में go and read it. ठीक है. Some history about it and all in the Wikipedia. Exercise restraint, do not summon government official at the drop of a hat. Drop of a hat मतलब हर थोड़ी छोटी बात पर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को सम्मान नहीं कीजिए, है ना. So सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये कहा है. The Supreme Court has said it to the High Court कि आप हर छोटी बात पे गवर्नमेंट ऑफिशियल को ना बुलाइए. ठीक है, जैसे होता नहीं, कभी कुछ इश्यू होता है तो हाई कोर्ट जज passes an order, summons. ठीक है, कोई सीनियर सेक्रेटरी को बुला लिया, होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को. ठीक है, सो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर कॉल्ड और समन्ड इन द कोर्ट कि आप जवाब दीजिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डू नॉट समन गवर्नमेंट ऑफिशियल एट द ड्रॉप ऑफ हैट, यानी हर छोटी बात पर या हर तुरंत हर छोटी चीज पर नहीं बुलाई. जब कोई बड़ा इशू हो तब देन यू शुड कॉल इट एंड ऑल. That is what the Supreme Court has said, है ना. Derogatory remarks from the bench about the official physical appearance, educational background or social status should be avoided. हाँ, कभी क्या होता है कि we have seen some incident where a high court judge orally said something about a policeman. ठीक है, इस तरह की, जैसे मान लीजिए कोई जज है, कोई मान लीजिए पुलिसमैन आया, जैसे सब इंस्पेक्टर, तो उनसे मतलब कभी पर्सनल सवाल पूछने लगता है कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, इंग्लिश आती है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट. So that is what the CJI has said, that the judges should avoid, and that they should comment on the educational background or social status and all, है ना. ये सब कमेंट ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है. should avoid and all. ठीक है. Issued specific guidelines for high courts to ensure that government officials are not summoned at the top of, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी किया. The decision comes 3 years after the top court orally observed that judges cannot behave like emperors, summoning official as a routine measures, है ना. तो 3 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा था कि जज जो है वो एम्परर की तरह ना बिहेव करे, राजा की तरह नहीं बिहेव करे कि जब चाहे कोई भी ऑफिशियल को बुला लेगी तुम एंड ऑल, है ना. सो दीस आर द थिंग्स, है ना.
The bench headed by CGI said courts should not rush to the demand of the personal presence of official even in contempt proceeding and all. मतलब कई बार क्या होता है कि हर बात में नहीं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बुलाओ, कोर्ट में प्रेजेंट हो, तो कई बार वो नहीं आ सकता इसलिए कि उसकी भी ऑफिशियल ड्यूटी होती है ना. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग दैट I mean the judges should not summon it in small cases and everything, and है ना, हर छोटी छोटी बात पर बुलाना it's not good, है ना. The judges should exercise restraint and all. हर एक और आर्टिकल पेज 12 में स्पेस एक्स फैल्कन 9 टू लॉन्च इंडियाज GSAT-20 सैटेलाइट टू स्प्रेड. देखो स्पेस एक्स इज अ US प्राइवेट स्पेस एजेंसी, आई होप यू आर अवेयर, है ना. एंड एलन मस्क इज देयर, इज द हेड ऑफ स्पेस एक्स. फैल्कन 9 जो है वन ऑफ द हेवीएस्ट रॉकेट माना जाता है वर्ल्ड का, हेवीएस्ट रॉकेट, वन ऑफ द हेवीएस्ट रॉकेट, ठीक है. तो उससे GSAT-20 जो कि इंडिया का होगा, सैटेलाइट होगा, इसके अंदर जाएगा, है ना. ऊपर में सैटेलाइट होता है मतलब रॉकेट के अंदर, है ना. सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है ना, इट्स अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, इसरो का कमर्शियल आर्म है ना. सो इट विल लॉन्च GSAT-20, है ना. इसका दोबारा नाम रीनेम्ड एज GSAT N2 उसका रीनेम कर दिया गया नाम, है ना. ऑन बोर्ड स्पेस एक्स फैल्कन 9. तो 2024 के सेकेंड क्वार्टर में समवेयर वी विल बी सीइंग कि फैल्कन 9 रॉकेट से, स्पेस एक्स के रॉकेट से GSAT-20 लॉन्च होगा. सो लेट्स वेट फॉर इट. When it will be launched, we will talk about it in detail. ठीक है ना. That is what is being talked about. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.